Bismillahirrahmanirrahim. Today in this video, we are going to have some discussion about MCQs of enzymes. It's Unit 3 or NMDCAT from NMDCAT syllabus 2021. Or you can discuss it with biological molecules. Active site of an enzyme have following features except active site definite charge bearing site भी है. It is used for catabolic activity as well as anabolic activity. So beta is a wrong statement over here. इसमें दो definite regions है, binding site और catalytic site, and it is specific in nature as well. So beta is the right answer. Let's move to the question number 2. Coenzyme is an enzyme with attached cofactor, so beta. And the enzymes important for protein synthesis are present in the cytoplasm. Photosynthesis के enzyme chloroplast में होंगे, respiration mitochondria और transcription replication nucleus, so delta. Feedback inhibition is due to the high concentration of end product, for example ATP. Enzymes involved in some metabolic pathways are normally present together in a precise order, so delta. The reaction between dash activates the catalytic site of enzyme. जब substrate bind करेगा तो substrate और binding site का आपस में attach होना catalytic site को activate करता है. So right option is Charlie. At limited substrate concentration, the rate of reaction depends directly on the amount of substrate present. याद रखिएगा जो चीज कम अमाउंट में होती है रिएक्शन रेट भी उसी पे डिपेंड करेगा और उसी को इंक्रीज करने से रिएक्शन रेट इंक्रीज करेगा. फॉर एग्जांपल an increase in concentration of enzyme will increase rate of the reaction. अगर एंजाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, इट मींस एंजाइम की कंसंट्रेशन लेस है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट, इसीलिए रिएक्शन रेट इंक्रीज किया है. सो अल्फा. A substance which reversibly changes the activity of an enzyme by binding at a site other than the active site is known as allosteric or non-competitive inhibitor. The functional specificity of every enzyme is the consequence of its specific chemistry as well as specific configuration, so delta. And the rate of reaction depends directly on the amount of enzyme provided. The substrate concentration is अनलिमिटेड. अगर सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है और आप एंजाइम प्रोवाइड करते जा रहे हैं, इट मींस एंजाइम कम है, तो उसी पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन. सो इसका मतलब है सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है. इट कॉजेज डिनेचरेशन ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, दैट इज एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज और पीएच चेंज, ये एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगी. यहाँ पे पीएच की ऑप्शन है, सो बीटा. Pick up the actual product of succinic dehydrogenase enzyme. It is fumaric acid. Succinic acid actual substrate. Malonic acid inhibitor. Butyric acid यहाँ पे irrelevant option है. Which of the following type of inhibitor can be neutralized by adding more substrate into the reaction? It is reversible and competitive inhibitor. जिसको substrate add करके replace किया जा सकता है. Optimum pH value for the working of pancreatic lipase is 9 और catalase के लिए 7.6, pepsin के लिए 2. Extremely high temperature causes denaturation of enzymes by breaking hydrogen bond. और जो pH है वो ionic bond को target करेगी. Which molecular structure of enzyme is essential for its activity? It is definitely tertiary structure because most of the enzymes they possess tertiary structure as a final structure. और वही ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी के लिए. दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स. इट इज irreversible inhibitor, and the inhibitors that bind tightly and permanently to the enzymes and destroy their globular structure as catalytic activity are irreversible inhibitors, जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे. An enzyme required magnesium ions to catalyze the substrate. Magnesium ion is best identified as an activator. ये 2016 का क्वेश्चन है. In 2017 फर्स्ट पेपर में which one of the following comprises of inorganic ion? इसका भी आंसर होगा activator. So beta.
Which of the following graphs shows how the rate of reaction of pepsin is affected by pH? pH रेंज बहुत नैरो होगी, सो नैरोस्ट रेंज यहाँ पे इस ग्राफ में शो की गई है। ये भी वाइड रेंज है, 2 to 10, इतनी वेरिएशन नहीं होती पीएच के अंदर। और पीएच 2 पीएच जो पेप्सिन है ये 2 पीएच के ऊपर ही मैक्सिमम आउटपुट देगा, यानी ऑप्टिमम इसकी पीएच होगी। सो गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है डेल्टा। A student of chemical engineering mistakenly gloved the toxic compound A। फिर डॉक्टर ने जी इसको बी कंपाउंड सब्सट्रेट दिया ताकि वो इसे ए को अवॉइड कर सके। हिज लाइफ वाज सेव्ड। तो ये ट्रीटमेंट मेथड शो करता है कि जो कंपाउंड उस बच्चे ने इनटेक किया, उस स्टूडेंट ने इनटेक किया, उसका रिवर्सिबल और कंपैरेटिव इनहिबिटर मौजूद था, जो कि इंजेक्ट करने के बाद कंपाउंड ए का इफेक्ट डिटॉक्सिफाई हुआ या खत्म हुआ। सो डेल्टा। द कोएंजाइम इज ऑफन एन ऑर्गेनिक एंड एज वेल एज अ विटामिन, लेकिन ये इनऑर्गेनिक नहीं होता, मेटल नहीं है, प्रोटीन नहीं है। सो राइट ऑप्शन बीटा। लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन proposed by Emil Fischer suggests that enzymes are restricted to one reaction type only, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की बात करता है। सो राइट ऑप्शन इसमें चार्ली। Most enzymes have an optimum temperature around 40 degrees Celsius। ये क्वेश्चन नंबर 23, 24 और सॉरी 24, 25 और 26, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि NMDCAT 2020 के पेपर से लिए गए। Enzymes work by lowering the dash of the reaction they catalyze, its activation energy. And with regards to enzyme action, this statement is incorrect. Addition of lot of succinates does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate, क्योंकि ऐसा हो जाएगा, ये रिवर्सिबल इनिबिशन है, कंपैरेटिव इनिबिशन है, इसको कंपनसेट किया जा सकेगा बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट और मोर सक्सिनेट्स। जबकि मेलानेट जो है वो ये वाकई कंपैरेटिव इनहिबिटर है, सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट पे, और नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट। सो इनकरेक्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे लिखा है डज नॉट रिवर्स, हालांकि ऐसा होगा ये रिवर्स कर देगा, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। अल्फा बीटा चार्ली आर द राइट स्टेटमेंट्स। What is the count of genes that determine the synthesis of one enzyme? Usually it is one gene. As you remember, one gene, one polypeptide or enzyme hypothesis. This statement about enzyme is true. Enzymes accelerate भी करेंगे रिएक्शन को by lowering down activation energy, 3-dimensional form भी है, and do not alter the overall change in free energy for a reaction. So delta. Zymogen is a proenzyme or enzyme precursor. So Charlie is the right option. That was all about questions for the enzymes.